Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Dear Sister. Today I'm sitting with Warda and Izza. Unfortunately, very sadly, Yusra is no longer at 189 Media, so we won't be seeing her much on Dear Sister. But मैंने उससे कहा है कि once in a while she can come join us on the podcast. But we will definitely miss her. Yes, she had lots of valuable things to share. And we had a lovely time with her. So we miss you, Yusra, if you're watching this a lot. And I'm sure that you guys will miss her as well. Yes, in other news, आज हमें नए लोगों ने join किया है. So we've hired 4 new people in the company and उनका first day था. So orientation और वो सब हुआ. And so maybe you will be seeing newer faces on the podcast. Did you ask them if they're comfortable being on? Yeah. Okay, so then we will definitely be seeing new faces. मैंने वर्दा को कहा था कि उनसे पूछें if they would like to come on Dear Sister at some point. तो उसमें भी मज़ा आएगा. Anyway, so we were thinking today, Warda came up with this कि आज हम बात करते हैं confidence के बारे में. और मुझे बहुत interesting लगा ये topic because confidence एक ऐसी चीज़ है जो at some point in your life it's an issue. बिल्कुल. So I thought कि चलो उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं and something very personal to me as well. But I'm going to start with Warda because she suggested the topic. So Warda, what do you have to say about that? Achha, so the person that I am today, like the person that people see and they're like कि यार तुम्हें भी इतना confidence कहाँ से आया या how are you so good with communication and all. तो to them I always say कि like this wasn't the Warda before ये 3-4 पिछले साल. And I always struggled with this because I was always that गर्ल जो अगलों को कहती थी कि ऑर्डर प्लेस करना है तो आप कर दें, किसी शॉपकीपर से बात करनी है तो आप कर दें, लाइक माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. सो दैट वाज समथिंग दैट रियली चेंज्ड माई लाइफ. व्हेन आई tried to take that step, I became confident, and then you're exposed to so many new opportunities as well. You learn a lot, you communicate better, you learn to communicate better. So that's why I wanted to talk about this, because I know that, and I've seen even in my university years that so many girls struggle with that, and so many girls are always hiding behind other people कि अच्छा वो मेरे लिए ये कर दे या वो मेरे लिए ये कर दे, which sort of holds them back from a lot of things that they can do in life, right? So that's why I wanted to talk about this and how I basically overcame that. It was like छोटी चीज़ें, like placing the order myself, standing up and going खुद से, talking to the teacher myself. ये छोटी चीज़ें होती हैं which I feel like they help you build that confidence and get those guts to really be able to face other people अगर if you're exposed to them. So yeah, that's why I wanted to talk about it. Actually it's funny because now I'm here and I'm just like speaking to people and talking to strangers and being here on the internet. But मेरा actually यही था, I was that girl जो class में ना हाथ नहीं उठा सकती थी कुछ बोलने के लिए because I was always so nervous. And I think a lot of the times confidence really has to do with your fear of judgment. कि आप पता नहीं कोई स्टूपिड ना लगो, सवाल ऐसा हो उनका सब देखेंगे. Especially लोग ज़्यादा हो तो then you're like more conscious के सबके सामने बेइज्जती ना. हाँ, सबके सामने बेइज्जती ना. I think it's also about कि लोग कौन है आपके इर्द गिर्द. लाइक मैं हमेशा अपने बारे में ये फील करती हूँ कि जब शादियों पे जाना हो ना तो रिश्तेदार में मुझे पता है उनको पता है मैं कौन हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती जब रिश्तेदारों की फैमिली में जाना हो. लेकिन अगर मुझे पता है कि अच्छा कोई फैमिली फ्रेंड है, सो आई नो दैट द पीपल देयर डोंट नो मी, तो उसमें मैं कॉन्फिडेंस से जाती हूँ वहाँ पर. अच्छा उल्टा है क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी होता है ना कि इफ पीपल डोंट नो देम तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो उस तरह की सोशल सिचुएशंस में दे आर मोर ऑकवर्ड कि अच्छा पता नहीं स्ट्रेंजर्स हैं वो हैं. लेकिन कुछ और उनको ये होता है कि अच्छा अपने जानने वालों में वो जी धड़ल्ले से हर चीज़ लाइक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे विल से एनीथिंग, दे विल डू एनीथिंग. But actually that makes sense as well because कभी कभार जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानते होते हैं when stakes are higher. कि it's not like कि आपको कोई नहीं जानता तो आप कुछ भी कर सकते हो. But it's like internet ना, internet में आप no one knows who you are, अच्छा anonymously आप कुछ भी कह दो. It's like that. I think the lack of confidence, it really stems from self-doubt. Because when you are sure of yourself, so you're confident. When you are doubting of the fact, doubtful of yourself, how you look,
or how you talk, or you think you might sound dumb, or are you dumb, or you know, तो वो वाली चीज़ में फिर आपका confidence जो है उस वजह से थोड़ा सा. Exactly, I can relate. Like that was the reason why I never used to do the things that I do now, because मुझे होता था कि ये ना हो कि I cannot maybe, I don't know, speak up as good as my friend does. Yeah, maybe, you know, I do not have the knowledge to say stuff in a conversation. Lekin that comes with time, and the more you try, the more you'll know what you're good at and what you're not good at. So then you can work on that as well. So it's very important to really push yourself. हाँ, I think like if you're not going to do it, you're never going to know. Yeah, exactly. Like you need to get out of your comfort zone. वो तो सबका comfort zone होता है ना. अच्छा मैं कुछ ना बोलूँ, खामोशी से सुनो. But confidence तब भी आता है जब you start breaking those barriers. हाँ, breaking those barriers. So do you think in your case, do you think it was just के देखो दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो आपका कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है, लाइक यू सेड, कि आपने कभी वो बैरियर्स ही नहीं ब्रेक किया, यू आर इन योर कंफर्ट जोन, और आपने कहा बस चुप ही रहूँ या क्या. बट यू थिंक, वाई डू यू थिंक दोज बैरियर्स एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस? जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास का इन्वायरमेंट इस तरह है कि जब कोई स्टूपिड बात बोल देता है तो लोग हंसते हैं, या टीचर जो है वो बेइज्जती करती है, तब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तब आप कहते हो यार नहीं रहने दो, बिकॉज ऑफ इट्स द रिएक्शन ऑफ द पीपल जो हमें इतना वो कर लेते हैं. हाँ. और डू यू थिंक दैट वाज द रीज़न फॉर योर अंडर कॉन्फिडेंस? क्या आपको लगा कि अच्छा यार ये क्या है, या फिर कभी वो वैसे ही बैरियर्स ब्रेक नहीं किए, या फिर कभी कभार कोई इंसिडेंट हो जाता है आपके साथ, यानी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड देन समथिंग हैपन्स, and then all of a sudden you're not that confident anymore. All of a sudden you're just like, no, like So what do you think was your case with that? With me, I feel like something that I've already mentioned so many times on the podcast is that I'm the only child. So I was always in my own bubble, you know. If there were any decisions that needed to be made, if I had to talk to somebody, so my parents would do it for me. They sheltered environment. हाँ, so not that they never like stopped me or anything. इस तरह का कोई सीन नहीं था, लेकिन it was always already done. So I never got the chance to really speak up for myself ever. ठीक है, and that was out of protection and that was out of love, but that's how it was. So when I was actually put in situations जहाँ पे मुझे लोगों से बात करनी है, या फिर in social settings, अगर क्लास में मैं बैठी हुई हूँ या बाहर फ्रेंड्स में बैठी हूँ, so suddenly my parents are not there anymore, right? But I don't know how to do it, right? So that was something that I had to overcome, because अब वहाँ से उठ के जब फ्रेंड्स में आए या फिर क्लास में आए, तो यहाँ पे people were also there, like my friends were also there, जो कि अगर मैं नहीं बात करी तो वो कर देंगी, right? So always it stayed that way कि I was always not speaking, right? Yeah, suddenly I was not taking those decisions that I could have. So to get out of that, I took a step, and the next time जब भी कुछ करना होता था तो I used to be like अच्छा मैं ही करूँगी, you know, and that's how I build my confidence. And then बहुत दफ़ा इस तरह भी हुआ कि I did embarrass myself and it did happen कि you know मुझे थोड़ा सा feel हुआ कि oh no ये मैंने क्या किया, but then again that shaped me, right? So now I know what to do and what not to. Now you can own yourself ना, ये तो मैं हूँ. Yeah, exactly. I think it's also about sort of, बहुत थोड़ी सी डीप बात करने लगी, but it's about how kind you are to yourself. So what I'll say is कि अगर आपके अंदर if you can humanize yourself as somebody who can make mistakes, as somebody you can forgive easily, you can you're less afraid of making mistakes. You're less afraid of failure, because you're just like, okay, even if I do mess up, what's the worst that could happen? Like it's not the end of the world. Okay, so what if I'll embarrass myself? It's okay, I'm human, I can make mistakes. Okay, so what if I failed? That's exactly the questions. I ask myself, अगर कुछ करना है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा worst case scenario गलत हो जाता है, what happens next? कुछ भी नहीं, अच्छा 2 सेकंड के लिए लोग देखेंगे बस, then they'll get back to work ना, and but they'll move on. I have a lot to gain from it ना, confidence and right, actually that's a very valid point कि आप ये देखो कि अच्छा उस मोमेंट में okay थोड़ी सी आपको embarrassment होगी, या but on the other hand you have a lot more to gain, because
after doing that specific whatever move that you have to do, you will have gained a learning, even if it was a failure. But if you're never going to do it, you're never going to learn. So you have to, like you said, you have to cross that barrier, and unfortunately that barrier can sometimes cost you your वो मतलब और मतलब, and then you do it enough times till you know okay it's fine. It doesn't matter. I've also noticed how it's in our earlier years that we have that fear of being judged, and then the more you grow up, suddenly it doesn't matter anymore. You're like, acha, you know, whatever. So, that happens maybe because wo early years hote hain, and then you're exploring people, different types of people, how they can judge you. Na ab to pata hai na कि अगर ये किया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा types, you know. So with enough experience you realize that all of these things जो आपके दिमाग में अपनी इतनी बड़ी बनाई होते हैं, they're actually not that big. But I do feel that obviously आपके environment से फ़र्क पड़ता है, and we need to be forgiving towards ourselves. People need to be forgiving, man. Everybody's a human. And I think मैं बहुत ज़्यादा ये बात कहती हूँ कि हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आपकी एक छोटी वर्ड और एक छोटे से बात पे किसी की सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस को कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना शैटर हो सकता है कोई. मैंने तो एक दफ़ा लाइफ में एक डिसीजन ली थी, एंड आई स्टिक बाय इट, कि इफ़ somebody random comes to me with an idea of something that they want to do with their life, doesn't affect my life, their work, even if I don't agree with it, I will always encourage them to do it, because you know what, I cannot decide for them. Because it might actually work out for them. So मतलब मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे वो discouraged या under confident feel करें, because उनके experiences होते हैं, their thoughts and ideas are coming from somewhere, and if they're feeling confident about them, there's a very high chance that they can make it happen because they are confident about it. और वो एक seed of doubt और under confidence आपको किसी के अंदर नहीं डालना चाहिए. So unless you know, they even sometimes when people come and ask me if this is a great idea, because that happens to me, especially जब मैं events वगैरह पे जाती हूँ ना, तो लोग आते हैं और वो कहते हैं आपसे एक बात डिस्कस करनी थी, I want to know what you think about it, because you know people consider you some kind of like role model or some kind of thought leader. तो उसमें मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ, उसमें मैं कोई मैक्सिमम कोई छोटी सी एडवाइस दे दूँगी कि यू नो समथिंग मोर मैक्रो, लेकिन माइक्रो पे मैं ये नहीं बताऊँगी what are the reasons why this is going to be difficult for you. Because I don't want to make them underconfident in that space, or because किसी भी इंसान में जब एक आइडिया आता है तो बैरियर्स ऑलरेडी होते हैं. I don't want to be that person to remind them of all the barriers. खुद ही सीख लेंगे. I'd rather कि वो कर लें, मुझे पता है कि ये बैरियर आएगा, but I'd rather कि उनको उस बैरियर का ना पता, वो खुद ही कर लें और वो उसमें से कुछ लर्न कर लेंगे, rather than कि मैं उनको बैरियर बताऊं और वो छोड़ दें. मोस्ट ऑफ द कि वो करें ही ना. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि एट द बैक ऑफ द माइंड उनको पता होता है कि ये बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड द मोमेंट समवन वॉइसेस इट आउट कि ये मसले हैं, ये आ सकता है, तो उनका बिल्कुल हो जाता है बस आई गिव अप, छोड़ दो, रहने दो. Maybe it's a bad idea, maybe I shouldn't even do it, but I think people should just try it, and even if it's going to fail, they will learn something from it. तो कोई बात नहीं, करने दो, ये भी करने दो. We're not that accepting of failure, na? That's a problem that exists, right? Yeah, so, we I don't think we ever tried learning from failures, ना. हम अच्छा हार के बाद जीत होना ये हमने नहीं सीखा. हाँ, बिल्कुल. But the thing is कि वो ये ना कि you have to fail at something enough times to win at it. Exactly. And that is the natural progress of anything, but we somehow don't understand that. भूल जाते हैं हम. I think we're surrounded by perfection ना. हर जगह आप देखते हैं perfection, and then social media addiction, only the best things go up. आपको लगता है अच्छा हर इंसान ही परफेक्ट है, और फिर जो मसाइल है ना मेरे में वो शायद सिर्फ मेरे में ही है. बिल्कुल. इसी तरह ना लाइक जब स्पेशली कोई सोशल मीडिया पे आना होता है, उसने स्टार्ट करना होता है, तो मुझसे लोग कहते हैं यार आप कैमरे पे इस तरह कॉन्फिडेंट कैसे हैं इतनी एंड स्टफ, एंड आई एम जस्ट लाइक it's not something that I knew from the start. If you look at my first few videos, I'm like an idiot in them. ठीक है, but I had to be an idiot
to be realize कि हाँ क्या to करना be here. If I didn't go through that, I wouldn't be here. तो लोग people need to understand. Listen, you have to. This is a process. तो वही बात है कि वो जो हमने long term वाली बात की थी कि अभी तो आपको humiliation होगी and you look like a fool and I did look like a fool. I have to admit, but I had to look like a fool to be here today. Exactly, and you really need to push yourself. I remember जब मेरी पहली podcast थी, I had that device for braces. मुझे तब लगे थे, and there was a time that I was like, I'll not do it because you know that fear of being judged. Again, that was something new. I had never gone in front of people with that device, let alone the camera in front of so many people. So I was so nervous, but then again, I really pushed myself कि नहीं वर्दा फर्क नहीं पड़ता. It's okay, and it's because of that time that I came on that podcast, वो जो हमने पहले की थी, एक गम आवर था उसमें, and that I'm sitting here today and I have the confidence to really talk about literally anything. So it's only because of that. So you really need to push yourself. Yeah, and do something enough times. So what do you think? What are some things? No, actually, I'll ask you first, Izza. Have you ever struggled with confidence? Yes. A lot. मतलब academics wise. हाँ अच्छा. मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं होता था और फिर बाकी बच्चे ना कुछ लोग बस नेचुरली होते हैं कि अच्छा हाथ ऊपर करो एंड ऑल दैट. मैं अपने अम्मी अब्बू के ज़ोर पे ना आई यूज़ टू गो टू लाइक डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट्स एंड ऑल, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज वो जो एक इनर वॉइस या एक वो नहीं होता लाइक सेल्फ, मुझे वो रियलाइजेशन नहीं हुई कॉन्फिडेंस की. तो क्लास में मैं कभी भी नहीं उठाती थी हाथ, और बहुत कम बार मैंने जब हाथ उठा के कोई जवाब दिया, स्पेशली जब सवाल तो ठीक है आप पूछ रहे थे, जवाब देना व्हेन टीचर आस्क समथिंग, फिर आपको होता है कि अच्छा जवाब अगर गलत निकल जाए तो क्या होगा. तो मुझे याद है कि ज़िंदगी में आई गेस 2-3 बार मैंने लाइक इन ऑल दीज ईयर्स मैंने हाथ उठा के जवाब दिया एंड दोज वर एक्चुअली राइट. एंड एक बार तो मुझे याद आया, वाज इन 2 क्लास और बाद में लाइक मेरा जवाब इतना अच्छा था कि मैम ने कहा अच्छा तालियां बजाओ, और मैंने कहा अच्छा ये होता है लाइक आई कैन गिव राइट आंसर्स. तो ऐसी ऐसी चीज़ से ना लाइक आई माइट हैव नॉट गिवन द बेस्ट आंसर, लेकिन दूसरी साइड पे जो टीचर थी ना, बिकॉज सिर्फ मैंने हाथ ऊपर किया था तो उन्होंने भी इंकरेज किया कि ओह दिस इज़ अ परफेक्ट आंसर एंड ऑल दैट, तो उन्होंने तालियां बजाई थी. उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत हुआ था कि यू नो व्हाट, अगर गलत भी जाता तो क्या हो जाता, अगला इंसान हाथ खड़ा कर लेता, वो मज़ीद एडअप करता, जो कि होता ही रहता है. सो ऑल दीज थिंग्स. एंड इवन बाहर भी मैं हमेशा अम्मी के पीछे, अच्छा अम्मी चले सब्ज़ी लेने जाएं और ऑल दैट, और अम्मी के पीछे पीछे, बट देन यू नो यू हैव दैट रियलाइजेशन के व्हाट व्हेन योर मदर हैंड्स दिस ओवर टू यू कि अच्छा तुम करो, आई कांट एक्चुअली रिलाई ऑन हर ना, एंड सीखना तो पड़ेगा, लाइक यू हैव टू टेक थिंग्स इन टू योर हैंड्स. तो ये रियलाइजेशन मुझे खुद ही हुई कि यू नो व्हाट, ग्रो अप एंड टेक मैटर इन टू योर हैंड्स. अब हर जगह अम्मी अम्मी नहीं. तो मैं इतना, फिर मुझे एक थ्रिल चढ़ा ना कि मैं अम्मी के बगैर भी लाइक उनको बताए बगैर मैं कुछ कर लेती थी, लाइक बाहर इंटरेक्ट कर लिया या किसी से, और फिर बाद में मैं अच्छा घर संभालना रही थी, और फिर जस्ट बिकॉज अम्मी ने कोई 2 दिन पहले कहा होता था कि अच्छा मुझे ये चाहिए, और लेकिन मुझे नहीं स्पेसिफिकली कहा होता था, लेकिन मैं कहती हूँ कि लेट्स जस्ट ट्राई, क्योंकि अगर मैं मम्मी को कह दूँ कि अच्छा मैं लेने जा रही हूँ तो शी विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा ये ले आएगी, तो मैं कहती थी अच्छा एक्सपेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, लेट्स जस्ट ट्राई इफ आई कैन बाय इट. Yeah, and I feel like it's so important for girls to be confident because मुझे ये लगता है कि बहुत situations में in Pakistan I've seen personally कि girls hold back because of their families, like they really won't take the first step or they really won't step out of the house because भाई ले आएगा या because भाई कर देगा. But in my family I've seen like because my mom and then मेरी एक ही खाला है and then my nano used to be there, their father passed away while they were young, so it was a very women dominated house. तो वहाँ पे हर काम वो लोग खुद करते होते थे, and which is why I've seen आज भी if we're going out for dinner या कहीं पे भी हम shopping के लिए भी जा रहे हैं, it's my mother who's always talking, you know. So that's something that I've not seen a lot, and that's something that I feel like it's very important because we should know how to interact with people out there, and I've seen in so many situations. It's a survival skill. Yeah, जहाँ पे लड़कियों को आगे होने, even in my friends बहुत दफ़ा the reason they used to not talk when we're out या वेटर से बात नहीं करनी या वो नहीं करना is because उन्हें कभी घर में भी ये चीज़ मतलब
करने नहीं दी गई, या फिर उन्हें बार्गेन करना नहीं आता, या फिर यू नो द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स जो कि हमारी मदर्स कर रही होती है. और तो बार्गेन करना औरतों का आई थिंक कुछ चीज़ों में लाइक औरतों को जब कॉन्फिडेंस आ जाए ना, लाइक यू कैन नॉट स्टॉप देम. बट आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आना चाहिए ये सब आपको, बिकॉज अ लॉट ऑफ गर्ल्स कैन नॉट. आई मीन दैट्स लिटरली द टिकट टू एनीथिंग ना. आप बाहर जाना चाहते हैं, अच्छा मास्टर्स करना है भाई. इफ यू डोंट नो हाउ टू डू द रेगुलर chores of the household, like how can you survive na? That's just a basic skill. But ये इसमें society का आता है कि you know, because we are so into others stuff कि किसी ने क्या बात की, कैसे बात की, कि हम बार बार nag कर रहे होते हैं, हम comments पास कर रहे होते हैं. So हर इंसान के अंदर वो चीज़ आ जाती है. मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम जब मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि पता नहीं क्या था, बट इट वाज लाइक अ हॉटलाइन, लाइक सर्विस वो नहीं होती कोई. आई डोंट नो इफ आई वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर, टॉकिंग टू द बैंक, आई डोंट नो, बट आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट वेयर आई वाज जस्ट लाइक अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं, बिकॉज लाइक यू डोंट इवन नो, लाइक बिकॉज आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हो कि यू डोंट नो द नेक्स्ट वर्ड टू लाइक टू से. कि मैं बोलूं क्या, या आप बोल भी सकते हो या आप नहीं, मतलब टू द पॉइंट के अगर ऑर्डर प्लेस करना है ना फूड का, तो अब आप पूछ सकते हो कि अच्छा मेन्यू क्या है, क्या हमें पता होना चाहिए. You know, just little things where you because, and literally only because you haven't done them enough times. Yeah. When you've done it enough times, then you know what you have to say, what you don't have to say, and all of that. तो हाँ, and असल में पता है confidence जो है वो it's a game changer for your entire life. Because मैंने पहले भी एक podcast की थी, उसका नाम है इस confidence, हाँ, is confidence standing between you and your success. Because lack of confidence की वजह से you can let go of so many opportunities that could literally lead you change your life. मतलब if you don't have enough confidence, you will never pursue your dreams. Yeah. Because you aren't confident about yourself or who you are. And जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तो यू डू दिस एंड यू डू दैट एंड यू गेट समवेयर. तो इट्स सैड व्हेन यू नो यू हैव कि आपकी सोसाइटी ने आपके अंदर इतना सेल्फ डाउट डाल दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम योर अर्ली ईयर्स वेयर मे बी योर पेरेंट्स डिडंट encourage you enough, or your teachers or your peers were judgmental, or you went through bullying, या जो भी, कि आपका कॉन्फिडेंस इतना shatter हो जाता है that it really affects the rest of your life. I mean, and then I would say to any girl there, if you're struggling with confidence, like you don't know what you're capable of the day you become confident. And the day you become confident, you're like, oh my God, so much potential. Yeah, I have so much potential. And what am I like doing? Because एक किसी से बात करके आपके पास एक ऐसी opportunity आ सकती है that could be life changing for you. So I think it's something that's really important. So Warda, what would you say that you said कि हाँ you pushed yourself, but what are some things you will say कि अच्छा this really helped you be more confident, or what would you like people to know or do more कि how they can become more confident? जिस मैं आपको बताऊँ, आप one of the वर्दा की example ले लें. वर्दा is one of the best employees here at 189 Media. मैं बता दूँ. She's really good at her job, and the thing is that of course I didn't know that when I hired her, but one thing that got her in this place was her confidence. Because you came in, the vibe that you had, the confidence that you had, मैं सोच भी नहीं सकती कि कभी अंडर कॉन्फिडेंट होगी, but clearly at some point you were. And the fact is कि same girl वही आके बातें भी करती है, लेकिन if she was lacking the confidence, I may not have hired her. True. And that. she's really good at her work, and maybe I wouldn't have hired her simply because कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो काम अच्छा कर सकती है और मुझे पता ही ना चलता बिकॉज कॉन्फिडेंट वाइब नहीं आई. राइट, इस तरह लग रहा होता है कि अच्छा दूसरी साइड पे द इंसान जो इंटरव्यूअर है, वो तो इंटरव्यूई जो है, ही इज जस्ट फेक इन इट. या स्क्रिप्टेड एक चल रहा है और वो बस बोले जा रहा है एंड इट्स नॉट लाइक खुद से वो नहीं बोल रहा है. हर कॉन्फिडेंस मेक मी फील कॉन्फिडेंट इन हर कि ये अच्छा कर सकती है यार, सीन है. एंड देन शी केम एंड देन शी डिड इट. एंड वही मैं कह रही हूँ कि एट द सेम टाइम
she could have had no confidence but the same skill and I wouldn't be able to see it. So Exactly what missed we were opportunity saying, हो जाती ना for opportunities. her. So Yeah. many of our opportunities just get missed because we really don't, you know, push ourselves. And how I did it, it's really simple. If I say कि कोई बहुत ही hard and fast rule है कि आप इस तरह ही करो तब भी होगा, so it's not like that. By pushing myself, I meant getting out of my comfort zone. Because my comfort zone at that time was कि अच्छा अपने friends पे, अच्छा अपने parents पे डाल दो, Reliance. reliance कर लो. So that is something that I did overcome जब I started doing things on my own. Now obviously it wasn't in my comfort zone to go talk to the shopkeeper because I had never done it before, ठीक है? It wasn't in my comfort zone to maybe take an Uber alone, right? But I did it because I really did push myself out of my comfort zone, and that's something that's underrated. I think that's something that we really don't work on, and it's something that we should work on सबसे पहले, because we do a lot of things जब हमें होता है ना कि अच्छा खैर है कोई बात नहीं करते, you know, इधर इसी comfort zone में बैठे रहते हैं, and that's when we really don't, you know, get to explore. exactly, and get to take all of those opportunities that are thrown our way. So that's the only thing I did, literally. Just push yourself. Push myself and come out of my comfort zone. And उसके अलावा if you're underconfident and if you think आपकी vocabulary अच्छी नहीं है, या if you know आपके communication skills अच्छे नहीं हैं, so I did courses. I've done courses जहाँ पे vocabulary के भी courses किए हुए हैं मैंने, and then communication का कोई course नहीं किया. That's just something that I learned from being social. Yeah, so लेकिन courses help a lot. There's this book, it's called Word Smart. वो आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो. So that was really good. So that's the only thing that I have done, and eventually with time I feel like you get used to it, and then the more you interact the better you get at it. And what about like environmental factors? जैसे बंदा कहता है ना कि कुछ चीज़ें तो आप खुद करते हो कि अच्छा you did this, but sometimes there are things in your life that make you confident. So you can say कि एक दफ़ा I maybe had this person in my life or this teammate or this someone जिसके साथ जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, या ऐसा, या एक दफ़ा ऐसी चीज़ हुई that made me feel more confident. Is there anything you can recall or anyone you can recall who helped do my that? best friend at the time जो मरियम थी, she helped me a lot with this. Like उस time पे, since I was that kid जो कि उसके पीछे छुपता थी, but at times when I told her that I was struggling with it, she was really open to helping me and really letting me take that opportunity instead of herself, because she was already confident, right? Nice. So she really did help me with that. So ऐसे लोग पे आपको याद रह जाते हैं, you know, who've helped you grow this much. Yeah. I think people and environment plays a huge role in building confidence as well, because you know, like if you take, so जब हमने फर्स्ट स्टेप की बात की ना, तो जिसमें हमने कहा कि आप फर्स्ट स्टेप लो तो चलो ह्यूमिलिएशन हो जाएगी, बट इट कैन ऑल्सो बी दैट इंसिडेंट दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम एवर डूइंग इट अगैन. जो मैंने बात की थी, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप कहते हो कि I'll do it, ठीक है, क्या ही हो जाएगा, but then you end up feeling humiliated या embarrassed या failed या uncomfortable, and then you're just like, oh, I'm never going to do this again. And I think so usme I think 3 factors play a lot of role. Is ke who you're surrounded with at that time, the people who can make you feel like oh fail ho gaya, छोटी छोटी चीज़ें, like if somebody is struggling with their English, तो अगर वो कोई कोर्स कर भी रहा है, तो if your friends are like, oh my god, what's happening, ये क्या कर रहे हैं यार, so that also really shatters your confidence at the time, right? Because you really want to do something and you're embarrassed in front of your friends. I mean, those are the last people that you should be embarrassed around, right? You need your hype people. Hype women. So I think people in times of when you have messed up, how forgiving they are, and then how forgiving you are, and then the environment of course, and thirdly I think your mindset as well. जिसमें मैंने एक और पॉडकास्ट की थी ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट की, कि जिसमें ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर्स को बहुत इंटरनलाइज नहीं करते. वो कहते हैं कि ठीक है ये हुआ, एम्बैरेसमेंट भी हुई, हाँ but you know this is what I've learned, and next time, so they'll say next time I will do it like this, but then some people would say there is no next time. They'll accept their flaws ना, जो पहले टाइप के लोग हैं. हाँ so accept तो फिक्स माइंडसेट वाले भी करते हैं and दूसरे भी करते हैं, but then again what they do about is
it is that ke too. what makes the difference. What right? makes the difference, right? Whether you accept them and be like, you know, okay, I can't do it, I'm like this. Yeah, you can be like, okay, I'm like this, but I think I can work on it. So that's the difference in the two mindsets. So हाँ, उसका impact होता है. But I think I want to say one thing here, कि confidence is not something that can be achieved permanently. So confidence will always be up and down where you are in life. Again, what you're surrounded with, what environment you're in. You will have, मतलब कभी आपकी life is sorted, perfect, well, you're doing great, vibes बहुत fit हैं, लोग भी अच्छे हैं. You suddenly move to another country. Where is your confidence then, right? And that's when you actually need it the most. So फिर वो होती है कि then you're, so it's not a journey like this where you can be confident and then जो भी आएगा जिंदगी में वो and it's not like on your lowest days भी आप फिर भी ठीक ही होगे. It does happen. It's an up and down. It's an up and down. But the point is to remember that the down should never be like it. There should be that drive, you know, I have to gain the confidence back and I have to like get up and, you know, do it again. So I think what we've talked about here is pushing yourself, your environment, people, getting out of your comfort zone, and also be those people. यार मुझे होता है कि you know, can we please be those people as well? Why are we? In fact, Happy Chirp के हमारी जो posts है ना, उसमें मैं आपने कोई रिसेंटली मेरे साथ कोई शेयर किया था, आई वाज थिंकिंग दैट अ लॉट ऑफ आवर पोस्ट्स आर अबाउट के लोगों को हमारे साथ कैसा होना चाहिए, पीपल शुड दिस इज, पर हमें पोस्ट इस लैंग्वेज में भी करनी चाहिए दैट वी शुड be this. Actually, I've made some posts. Okay, that's good. So I, like red flags about yourself, and also I have done this. You can also be toxic at times. And like how we should be, right? Let's talk about how we can be those people that we want others to be. जो कहते हैं ना कि वही दूसरों में red flags और like पता नहीं क्या पोस्ट थी यार, काश याद होती तो ज़्यादा स्पेसिफिक में बात कर सकती हूँ उस बारे में, बट बाउंड्रीज़ के ऊपर थी शायद कि यू नो बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, बट और लोगों को आपकी बाउंड्रीज़ कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट देयर शुड बी अ पोस्ट ऑन हाउ वी कैन रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अदर पीपल. यू नो कि कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन भी तो ना, बिकॉज आई फील लाइक कि recent times में there's a lot on the internet about how others should be. We're really going in that direction, और फिर ना वो एक there's this thing we're just like expecting others to be better. Be better to us bhai. And if everybody's reading that na, everybody's expecting दूसरों से others to be that way. So we need to talk about like how we should be, how we should be as well. That's so important. So be the people who can encourage other people, and don't be that person who will say something, behave in a way, scoff at someone, pass a sarcastic comment, make a joke at the expense of someone, say something discouraging. Don't be that person. You know, even if it's like your really close friend, I would highly recommend not making jokes that could affect their self-esteem. You know, क्योंकि आपको आप जितना भी कर लो, आप किसी के एक्सपेंस पे कोई जोक मारते हो for the sake of being funny, they absorb it. और वो subconscious में आपके जा रहा है और वो आप ले रहे हो. बात आ जाती है कि at the end of the day, on our lowest days, we do feel those jokes and we do think about those. So you would never want to be the person who really makes somebody else feel that way on their lowest, right? So we shouldn't. Sarcastic comments and all of these things, they should just not. They can have a bigger impact than we realize. तो वो चीज़ है कि वो हम सबकी self reflection में एक चीज़ होना चाहिए कि हमने ऐसा तो नहीं किसी के साथ किया. And the funny thing is that friends tend to do it a lot with each other. because मजाक के दोस्ती के नाम पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह चल जाती हैं. I think दोस्ती में ना लोग बाउंड्रीज भूल जाते हैं कि दोस्ती है ना ईजी. लाइक कुछ भी अब तो दोस्ती एग्जिस्ट करती है ना, अब कुछ भी रिलेशनशिप्स में भी लाइक बाउंड्रीज नहीं एग्जिस्ट करती. एट सम पॉइंट इतनी फ्रैंकनेस आ जाती है कि like people forget कि हम बाउंड्री फिर भी होनी चाहिए. प्राइवेसी should always be there. Exactly. I've seen so many friendships, experienced so many friendships actually, जहाँ पे you know अगर हम भी कोई even if we are making jokes तो
you would make a joke that would offend the other person, but if the same person is doing the same with you, they would expect you to not really, get offended by it. To which I always say that you don't get to choose what the other person gets offended by, right? He or she can get offended by literally anything. How you choose to really tackle with that situation is something different. अगर आपने एक मजाक कर भी लिया है, let's say on the basis of your दोस्ती, या अगर आपको लगता है कि it was fine, but अगले बंदे ने माइंड करिए, the right approach to that is not saying कि यार इसमें क्या बात थी, ये नहीं कहना चाहिए कि माइंड करने वाली क्या बात थी, आई थॉट हमारी अब इतनी दोस्ती है. What you can say is कि I'm sorry, I did not know that this is something that you would get upset or hurt by, and I'm sorry that it did you, and I will make sure that I don't do this again. That's fine. Let that person, if somebody gets hurt by something, they've clearly shown a boundary. Respect it. Exactly what I was about to say, because again it's okay if you even made a joke that did make the other person uncomfortable, because हो जाता है कभी-कभी आपको समझ नहीं आता. But that's fine. But then I've seen so many people who are like यार मतलब they put it on the other person. ये गलत है. अगले को गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि अगला माइंड कर गया. हाँ, so ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. I read this somewhere कि if you met yourself, would you like yourself? And that hit me. You will be the person that you want to meet. Yeah. And that's like the only way आप like self-reflect कर सकते हो ना, like that. वो चीज़ it stuck with me. That is very powerful. वही बात है कि boundaries लोगों को बतानी है, लेकिन खुद जब कोई बताए तो फिर कहना okay. So वो वाली चीज़, yeah. So like we need to be those people who can help others become more confident. As well. And I'd also like to add something, जैसे आपने वर्दा से पूछा कि like what thing was that which she overcame, तो I would say कि मेरे mindset के लिए it was like stop comparing, because आपको होता है कि you have so many ideals around you. अच्छा parents होते हैं, बड़े बहन भाई होते हैं, आप उनको देखते हो और कहते हैं भाई बहुत confident है, मैं ये हो ही नहीं सकता. It's fine, like they had the process. Yeah, it's easy to get intimidated by such people around you. But you need to trust कि मतलब एक रियलाइज आप करें इस बात को कि no one was confident like born confident. No one was born confident ना. Everyone had to go through a process, ups and downs आए. It won't be the same for everyone. Obviously someone will struggle differently with it, लेकिन वो इंसान जो आप अभी उसको देख रहे हैं, that's just the end result. Yeah. They've been through somewhere as well. They've been through a lot. तो you can also like खुद को trust करें and just stop comparing and खुद को like accept yourself, your flaws. If you will always compare, तो आप हमेशा खुद को बेस्ट से ही करेंगे. Not from the mediocre. आप डायरेक्टली बेस्ट से करेंगे और फिर आप कहेंगे ना, not me. So that can help. और सोशल मीडिया की वजह से मैंने एक चीज़ ये देखी है कि कंपैरिजन्स जो है ना वो अनफेयर इस तरह से थोड़े से, कंपैरिजन तो करना भी नहीं चाहिए, बट कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर इस तरह से होना शुरू हो जाता है कि आप ये भूल जाते हो कि अगले बंदे की एज क्या है, वो लाइफ में किस जगह पे है, वो किस शहर में है, वो किस कंट्री में है, या कुछ भी, या उनकी लिविंग सिचुएशन क्या है, फैमिली किसके साथ रहते हैं, yeah, like even if they're on screen, even then you tend to like forget कि जैसा for example अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी के साथ अपने आप को compare करती हूँ, another mother for example, ठीक है, और उसके बच्चे जो हैं वो 5 साल के हैं, 5 से 7 साल के हैं, whatever, बड़े हैं, ठीक है, और मैं कह रही हूँ यार कैसे सब कुछ मैनेज कर रही है, not realizing that my son is very young right now. Why am I comparing? In fact, I should just be like, okay, take it as an inspiration that you can get there, and you don't know that as a young mother how this person even was. क्योंकि जैसा अगर मैं अपनी एक स्ट्रगल की बात करें, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी वेयर आई वाज जस्ट लाइक बिकॉज मैंने बहुत दफ़ा आई बिन वेरी ओपन अबाउट दिस थिंग कि आई हैव अ ह्यूज आइडेंटिटी क्राइसिस आफ्टर बिकमिंग अ मदर, एंड मुझे होता था कि अच्छा अब बस मतलब यही है, और मतलब हाउ विल आई रीडिस्कवर, हाउ विल आई गेट माई कॉन्फिडेंस बैक, एंड मैंने ऑनलाइन देखा अदर मदर्स एज वेल having their stuff figured out, completely not realizing they've been mother for years. And the comparison is not fair, and that should actually make me feel like no, maybe
they were just like me when they had a young child, or in fact maybe they were even worse. I don't know that, but for me it should be more like, you know, the mindset flip is ke, oh, I can get there as well maybe in a couple of years. This person has her identity figured out, like she has her identity totally figured out. That means that I can do it as well. So ये वाली जो चीज़ है ये, and also what shows and what doesn't. जिस तरह मुझे लोग कहते हैं कि like how do you do everything and how do you manage everything, and in my head I'm just like, oh my god, how do people manage everything? So it's just like you think that's where the person and could obviously be. social media पे we're always showing the best parts of our life, right? बहुत कम लोग, अब मैंने इस तरह, अब I do see people who are showing problems, struggles, ये वाली चीज़ें अब लोग शेयर करते हैं, but initially तो सिर्फ यही था कि you know the best parts of your life are out there, right? So it was easier to go in self doubt, to really be like, oh my god, like best life. Exactly. फिर जब हम compare भी करते हैं, even though there's content out there, there are people out there जो अपने struggles भी they're putting it out there, लेकिन we would always compare it with people who are better than us, not people who are going through the same thing. But also हम comparisons भी तभी करते हैं when people are doing better or they're only looking. So अब मैंने आपको बताया है कि मैंने कितनी दफ़ा अपनी स्ट्रगल बताई है ऑनलाइन, कितनी दफ़ा मैंने शेयर किया है कि मेरी सेल्फ इस्टीम का क्या हाल है, फिर भी लोग मुझे कहते हैं हाउ आर यू लाइक दिस, बिकॉज पीपल आर जस्ट लाइक, वही बात है कि लोग जो हैं वो बस कुछ चीज़ों को देखना चाह रहे हैं और वो उसी से उनका दिमाग चल रहा है. नहीं होता ना आपके पास, तो आप उसको थोड़ा दैट अट्रैक्ट्स, दैट एंटाइसेस मोर, राइट? सो इस वजह से आप ज़्यादा और से सुनते भी वो हो, करते भी वो हो. सो एंड दिस जो स्ट्रगल वाली बात है कि मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक शूट है और वो वीडियो का एंड रिजल्ट आता है, मे बी इट्स अ फैशन शूट एंड इट कम्स आउट रियली वेल एंड रियली नाइस, and obviously जब shoot में I am smiling and I am posing because it's a shoot and I'm not going to make a sad face in the shoot, right? But like मेरे कुछ इस तरह के shoots हैं that are, जब कोई नया आएगा ना वो कहेगा यार, वो ये देखेगा मेरी प्रोफाइल पे, वो कहेगा कि अच्छा यार ये कितना फिट शूट हुआ हुआ है इसका, और इसका तो बच्चा भी इतना छोटा है, हाउ इज शी स्टिल लुकिंग लाइक सो स्लिम और सो नाइस और व्हाटएवर, जो भी किसी के जहन में आता है. आई मीन आई वाज़न्ट स्लिम बट स्टिल, but for me I remember like most of my shoots in my early postpartum days I just had tears in my eyes in them. तो आंखों में तो मेरे tears थे, but you don't know that. When fittings were an issue for me, when confidence was an issue for me, yes, of course I can't be crying in the final result of the shoot, but behind the shoot I was struggling and I was breastfeeding at the time as well. तो you know when you're breastfeeding और आपको थोड़ा सा time हो जाए between your feeds, तो you know आपका internally like you know your breasts are full, they're hurting, all of these things were happening at the time for me, you know, and I had tears in my eyes, I had no confidence, I don't like how my body looked, but the end result of the photo shoot will of course be nice, but I am feeling those things. So it's just like that's why comparison is not fair. It's just not fair because you could be किसी के आप end result को उसकी मोस्ट जो शायद बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस सिचुएशन में वो आप कंपेयर एंड रिजल्ट से कर रहे हो, आप स्ट्रगल से नहीं कर रहे, जो तुमने बात की थी दैट यू आर कंपेयरिंग विद द एंड रिजल्ट नॉट विद द स्ट्रगल. दैट्स सो ट्रू. That's really true. So and plus like some things like अच्छा especially online जब आप लाइफस्टाइल देखते हो तो आप कहते हो कि यार कितना फिगर्ड आउट है इनका सिस्टम, घर इतना साफ है, फलाना है. A lot of the times हाँ कुछ लोग होते हैं who are living that life but that doesn't mean they were always like this. या कोई बहुत healthy diet करता है या exercise भी करता है और healthy खाता भी है. That doesn't mean that you have to be the same. Even if they're perfect at what they're doing, you can be otherwise. It's just important to remember that if you do want to be that person, it's just that they weren't always like this. It's definitely a journey. Like हम humanize नहीं करते ना अगले को, हम उसको एक perfect ideal figure बना लेते और फिर human का aspect बस निकाल ही देते कि perfect. खुद ही हम लोगों को pedestal पे खड़ा करते हैं. And I'd say, I mean some people would say कि यार लोगों को responsible होना चाहिए in sharing the struggle वाली bit, and I agree to some level कि अच्छा उनको अपनी struggle भी share करनी चाहिए और वो भी, but see others mindsets are not your responsibility. Yeah. It's people who need to realize that they shouldn't be comparing. And दूसरा
it's not fair to put that pressure on other people to show their vulnerable moments. If that's not something they're comfortable with, then they don't have to do it. It's not fair, right? Like आप ज़बरदस्ती अपने struggle, अपना down moments share करो. They've reached to a certain point in their life to overcome that, right? So it's necessary नहीं है कि उनको वो वाला part दिखाना है अपना ज़िंदगी का. उनकी boundary है ना, उनकी privacy है. Some people don't like to. Some people are oversharers. वो रोते हुए भी आ जाएंगे. And that's completely fine. I'm actually very open to that. बहुत अच्छी बात है. It takes a lot of courage to be vulnerable, but not everybody has to be brave. Like if it's a boundary for you, for your privacy, that's fine. You can draw that boundary. Listen, if 50,000 people are watching this, I don't want 50,000 people to know that I am going through this. It's fair. Like आप अपने कोई आपकी बहुत personal चीज़ हो या आपकी struggle हो, आप sometimes सोशल मीडिया को बता दो. आप लाइफ में 2 लोगों के से ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहते. समटाइम्स यू डोंट वांट एवरीवन टू फाइंड आउट समथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू. एंड आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बिकम टॉक्सिक फॉर द ऑडियंस ना. हाँ, एग्जैक्टली. वो टॉक्सिक बन सकता है. एंड लाइक लेट्स से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक इन्फ्लुएंसर्स, तो इन्फ्लुएंस चूज टू शो द बेस्ट पार्ट. अगर वो अपने स्ट्रगल शेयर करने लग जाए तो they wouldn't be maybe an influencer anymore, क्योंकि देखने वाले यही कह रहे हैं कि अगर इसमें इतना सेल्फ डाउट, इतनी vulnerabilities, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, so it isn't really working out ना. Like how can this person be an influencer? हाँ, इस तरह वाली चीज़ आ सकती है. Agreed as well, but वही बात है. I think it's just you have to. देखो, some people will say कि हम आपको पेडिस्टल या परफेक्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि आप यही दिखाते हो तो हम आपको परफेक्ट ही समझेंगे ना. तो आप थोड़ा सा, but I think it's just important for us to remember to humanize people, because people are people, no matter how perfect they appear. And influencers are people. हाँ, but also do not mislead people into thinking that it's perfect as well. You don't want to, जिससे मेरा ये, I find it hard to show up in my vulnerable moments, but I don't find it hard to share about it later. Or in a better state of mind. So I could be going through something at the moment, but I'm not going to share about it when I'm crying about it. I'll share about it the next day when I have cried about it. Sorted in my mind, right? So I think that kind of balance is important, where you can not mislead and you can tell people but in my case I've noticed कि लोगों को तब भी लगता है कि परफेक्ट है. जब आप सॉर्टेड आके बताओ तो उनको लगता है कि लाइक बट नो, लाइक आई डू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस जब मैं इस तरह की चीज़ें बातें शेयर करती हूँ कि थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई रिमेंबर जो मेरी पहली ईद थी राफेल के बाद, इट वाज सच अ डिफिकल्ट डे फॉर मी. आई कांट एक्सप्लेन. Raphael was being very difficult that day, like really difficult. He was 3 months old. He did not sleep the whole night. तो हम सोए नहीं थे, like not even a blink. ठीक है. फिर अगले दिन ईद थी, तैयार होना था, functions थे, and he was just cranky all day, and I had to get ready and I had to get him ready, and Muzammil was also done and I was done. I had a migraine. I had to manage the baby. I had no help with the baby. I had the worst Eid of my life. मतलब मुझे याद है, मैं जब घर आई थी उसके बाद I was sobbing and crying my heart out because I couldn't deal anymore. I was just done with the day. It was a very hard day for me. But I wasn't in that space कि मैं उस वक्त बैठ के ये करूँ. I had so much to manage. मैं बैठ के लोगों को बताऊँ कि so the next day I put up an entire story कि कल ये हुआ था और ये हुआ था और ये हुआ था. And sometimes when you're going through that thing, you really don't want to relive it उसी time पे. You're like, अच्छा यार, I'm going through it right now. बाद में सोचेंगे. Yeah, when you have like recently been through it, तो you don't really want to go back, right? तो फिर आप बाद में उसको share करते हो. हाँ, तो मेरा होता है कि अच्छा ये हो ये चीज़, अब मैं अगले दिन उसके बारे में बात कर सकती हूँ. सो हाँ, बट आई थिंक फॉल्स पिक्चर नहीं पेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ की. आपकी लाइफ परफेक्ट है तो परफेक्ट है भाई. ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती कि फॉर एग्जांपल आपका कमरा अगर गंदा हो रहा है तो आप जो है एक साइड पे बस कर दो चीज़ें और स्टोरी बनाने के लिए वो लाइक यू नो लाइक या तो फिर आप ना बनाओ या ना बनाओ. Like you know that's all I'm saying. Just be, if your life is perfect, that's fine. Let it be perfect. Yeah, and even if it's not, it's okay. It's okay. Yeah. Just be more accepting of it. Yeah.
Yeah. It's more important to be authentic. Yeah, Which I'd comes say. back to the first thing that we did talk about कि confidence आपका तभी आता है जब self doubt नहीं होता. हाँ. So जब self doubt होगा तो ये सारी चीज़ें भी साथ ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी. Yeah. So anything else you I'd have in maybe mind regarding think- this topic? I'd maybe say this for the parents out there कि I know like parents को का यही दिल चाहता है कि उनका जो बच्चा हो वो एक perfect image हो, ये नहीं वो नहीं, लेकिन उसी चीज़ में ना जब आप उसको इतना कर रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी चीज़ ऐसे करते हैं तो एक वक्त आता है कि it is more like you're nagging your kid और वो इतना perfection में चला जाता है ना कि वो फिर नहीं sort out कर सकता कि like what is his or her identity and what is something जो उसके पेरेंट्स ने उसको बनाया है. तो उसी वक्त आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं ना कि क्योंकि मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, हमेशा मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे ठीक कराया कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच लाइक अगर मैं खुद भी सोचूं ना कि अच्छा इफ़ आई एम अ पेरेंट हाउ विल आई डील विद इट, तो इट इज़ हार्ड बट अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू लाइक लेट द चाइल्ड मेक द मिस्टेक और फिर उनको आगे प्यार से समझाओ कि नो दिस इज़ वेयर यू वर रॉन्ग. Yeah, rather than case don't let them build that confidence on their own. आप उनको बस बोलो कि नहीं ऐसे ही and this is how you're supposed to be and this is what you're supposed to do. और जो nagging है जिसकी आपने बात की, nagging is can literally destroy your confidence. Completely, because if there's that noise that is constantly coming in your mind of how you're not doing this right and how you're not doing that right, so आपका internal monologue ही वो बन जाता है that I don't know how to do things Exactly. right. और वो कहते हैं कि आपका जो inner voice होती है ना वो सबसे ज़्यादा आप वही होती है जो आपके बचपन में आपने आपके पेरेंट्स से सुना होता है. So a lot of your internal voice पहले पेरेंट्स से शुरू होती है, फिर आपकी peers और वो आपकी जो अपनी वॉइस है वो बनती जाती है what you tend to hear. It's very important कि सिर्फ डांटा ना जाए बच्चों को, उनको appreciate भी किया जाए because that's something that doesn't happen a lot, you know. Like the most I've heard is always कि अच्छा ये ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, never they ये बहुत अच्छा काम किया. But the thing is कि उसमें भी I would say appreciation होती है, लेकिन appreciation का प्रॉब्लम ये है कि appreciation की जाती है when they perform in a way that you like and love. ठीक है, तो उस पर उनको praise किया जाता है, तो वो एक parent and people pleaser बनते हैं. The thing that's important to do is to not make a big deal out of every mistake. Whether you appreciate it, be okay, accepting, forgiving. You can have a talk about it, of the lessons about it, develop that self-reflection in them. Rather than this constant, they have to be this way for the appreciation. You know, like आपको appreciate ही अगर कोई तब करता है and you're like spending your whole day with them, तभी like everyone wants to feel loved ना. तो अगर एक specific person सिर्फ एक ही moment में करता है when I act in a certain way, when they like it, yeah, तो I'll definitely become a people pleaser. So I think what I've learned is that you should not किसी भी एक्सट्रीम में नहीं चलना चाहिए. आपको ओवर प्रेज भी नहीं करना चाहिए और आपको कभी भी ओवरली रेप्रिमांड भी नहीं करना चाहिए. कि तो हमें पता है कि किसी की चीज़ की भी एक्सट्रीम बुरी होती है, इसमें भी ये है. आई थिंक in parenting so far I've learned, I don't know because right now all the parenting I'm doing is it doesn't have its results as such, except for some things, but जो आपकी ये deep वाली चीज़ होती है ना that can build a personality or confidence, उसमें है कि a lot of things just need to be ignored. Like they don't need to be given too much attention because that's what actually messes it up. नहीं कर रहा ये चीज़, you want your child to do something, they're not doing it, it's okay, let it go, don't push them too much. नहीं करना चाह रहे, जिस दिन दिल चाहेगा कर लेंगे. या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर बिहेविंग इन अ वे दैट यू, जिस तरह अगर वो टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं तो आप हर टैंट्रम को
इतनी अटेंशन ना दें कि ये मत करो, छोड़ दो, वो उस इग्नोर कर दो उसके टैंट्रम को, उसको समझ आ जाएगी यार इसका फ़ायदा नहीं होता. This was me as a kid. मैं बहुत tantrums throw करती थी and like my mother was like ये लो अच्छे कोने में डाल देती थी और फिर मैं वहाँ होती थी और फिर जब मैं देखती थी कोई attention नहीं मिल रही I would get quiet. Yeah, and sometimes just let them feel, okay, if he's feeling angry or sad, just let him feel it for a bit, rather than me quickly trying to fix that. गुस्सा है क्यों, गुस्सा है, रो रहा है क्यों, solve. No, this unnecessary need to fix everything. Yes, I don't need to fix his every tiny issue. He's just let him like figure it out, feel maybe. it, and he will maybe he will figure it out, or maybe he will like not figure it out, or just leave it for a bit. Yeah. And when he is done throwing his tantrum, I can be like, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, because they say कि when you are in an emotional, especially when kids are having a tantrum, it's a shutdown of their brain. So whatever you are saying, they can't even comprehend it. जो शायद वो जब एक calmer state में कहते हैं आपने किसी को भी कोई skills सिखाना है, कोई बात समझानी है, तो it's scientifically proven that it has better results when the other person is in a calm state. Then they will learn. If you will try to teach them a lesson during their tantrum, make a point then. नहीं समझ आएगी, because दिमाग shut down होगा, गुस्सा होगा, रोना होगा. Especially kids, when they're just kids don't know anything. If they're feeling something, they're just feeling them. उस वक्त वो rationalize नहीं करेंगे आपके बैठ के लिए कि आप क्या थोड़ी देर उनको छोड़ दें. तो वही मतलब मेरे लिए भी obviously it's a learning curve at the moment. I am a new parent, तो कभी कभार होता है कि अच्छा कब कहना चाहिए, कब नहीं कहना चाहिए, क्या होना चाहिए. तो बट आई रियलाइज दैट नॉट एवरीथिंग वारंट्स a reaction, or either a praise or a वो. हर छोटी चीज़ पे बच्चे को praise करने की ज़रूरत नहीं है, because they start living for your approval. Sometimes just let them do things. अच्छा कर लिया, okay, move on. Yeah, that's true. Yeah, so I think that's about it. Yes. Thank you so much. I hope हमारी बातों से किसी को who was under confident अब उसको confidence आ जाए, and he or she does all the things that philosophy understand कर सकें. And I really hope like हमारी generation and all, like the upcoming generation, like we become better parents. Better parents, better role models, better parents, better mentors, better khalas, puppies, everything. Friends. Better friends as well. You know, just it's fine. I think it's what I'm trying to say is just chill. As a parent, it's hard. Obviously, especially as a parent, it's the hardest, where you have this constant need to protect and make your child into this most perfect thing. इससे मुझे एक और चीज़ याद आई. किसी ने मुझे कहा उस दिन कि अच्छा राफेल जो है ना, जब वो नए लोग होते हैं ना तो शक्ल बन जाती है उसकी, और ना वो हर किसी पास जाता नहीं है, वो थोड़ा ऐसे कर रहा होता है. तो ज़ाहिर वो अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि यार लाइक कैन यू जस्ट लाइक बी नाइस एंड फ्रेंडली, जस्ट बी फ्रेंडली, लाइक सलाम करना आता है तुम्हें करो, लाइक यू नो कोई उसको लेना चाह रहा है वो. तो पहले मुझे थोड़ा सा फील, देन आई रियलाइज्ड कि no, if he doesn't want to like you know interact with somebody, उसका नहीं दिल चाह रहा, if he doesn't like the environment or he's not feeling it, I'm not going to push him to do it. क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि हमने तो अच्छी बात है ना कि वो हर किसी के पास नहीं जाता या हर किसी के साथ वो नहीं होता, क्योंकि वैसे तो वो बहुत फ्रेंडली है, वो बहुत हैप्पी है, और जब वो उसको एनवायरनमेंट अच्छी लगती है तो वो करता है, उसको नई एनवायरनमेंट अच्छी लग रही तो वो ना करे. एंड आई डोंट हैव टू फोर्स हिम टू बी दिस perfect kid who is nice to everyone. You know, if he और फिर किसी ने मेरे पॉडकास्ट में एक दफ़ा बोला कि बच्चों की भी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, and I need to respect his boundaries from now. To get him understand what boundaries mean. अगर वो अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर रहा है कि मैंने नहीं जाना इसके पास या मैंने नहीं करना सलाम, बच्चों की बाउंड्रीज की कोई लॉजिक नहीं है. मैक्सिमम क्या लॉजिक होगी, नहीं दिल चाह रहा उसका, नहीं करना उसने. बट मुझे उसकी अगर मैं उसको कह रही हूँ सलाम करो, वो नहीं करा, और वो तो अभी बहुत छोटा है, बच्चे तो बस वैसे ही नहीं, बट इट्स अ मेंटल नोट फॉर मी राइट नाउ. फॉर द फ्यूचर आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स हिम इनटू डूइंग इट, बिकॉज दैट इज़ द वे ही विल वैल्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज, स्पेशली सोशल बाउंड्रीज. क्योंकि आई नो कि हमारे बचपन में हमारे सिस्टम बहुत हुआ है,
नहीं इस तरह करो, इस तरह करो, इसके लिए यूँ करो और ऐसे करो, and you're just like, listen, I don't want to do it. I remember at times my mom used to be like, अच्छा इससे दोस्ती कर, like you know kid में जाके used to be like, अच्छा कर लो इसको भी साथ खिला लो, and I used to be like, mama no please no, I don't want to. And then मतलब she understood and she never did that again. तो फिर I was more confident again कि अच्छा चलो मैं खुद चली जाती हूँ, कर लेती हूँ. You know, that's when I felt better and I really wanted to play with them because it wasn't pushed on me. हाँ, वो again balance कि आपने कहना भी है लेकिन आपने force नहीं करना. कहना ज़रूरी है क्योंकि आपने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखानी है लाइफ में, फिर तो आप उन्हें ना सिखाओ, सलामी करना ना सिखाओ. लाइक आपने कहनी भी है कि भाई सलाम करना होता है लोगों को, बट let them choose ना. एटलीस्ट बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट तो आया ना उन्हें. तो हाँ, anyway, thank you so much for listening to this conversation. Thank you. And let us know in the comments what you think about confidence. Again, this is a reminder, confidence is it's not always uphill. There will be times when you do feel underconfident. Even if you are at your most confident, it's okay if someday you are not feeling it. And you know, something happens in your life that stops you from feeling confident. The point is to figure out a way to get back up, whether that means working on the weaknesses that you are that you need to work on, or just strengthening the strengths that you have, learning a skill, taking a course. Do take those physical steps to actually build that confidence. Figure out what is it that you're missing that is stopping you from being confident. Is it a communication skill? Is it your do you think you have like bad teeth or bad hair or something that makes you feel like that? Or maybe you think that you are overweight. Agar aisi koi cheez hai and you think that this is a flaw that I can change and I cannot accept, and I'm not just talking about physical ones, even if they're like, you know, you don't think you're smart enough, or vocabulary की जैसे बात की, and you think that you can overcome them, then I highly recommend to overcome them, because it's good to become a better person. Get better habits. Why are you overweight? Do you have overweight? Do you overeat? Like, do you have some bad habits that you shouldn't be having? Work on that. Work on your habits. Try to be that person who can be confident, who needs to be confident. And visualize that person, become that person, and you will be confident. And if there are things that you cannot change, then accept them. Very important. Yes. And if there are situations that make you underconfident, then push yourself and cross those barriers and do them. And simply, if there are things you don't want to do, then don't do them. But if it's something you want to do, then you need to cross those barriers, and eventually you will get there. But ये ना करें अपने साथ कि आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप नहीं कर रहे हैं. So don't let it hold you back. Don't let your confidence hold you back. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe, and we'll see you next time. Allah Hafiz.